ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनस्य भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है। We welcome all of you to today's Bhagavad Gita class. We are studying chapter 4, verse 12. In the previous verse, Bhagavan explained वो उसी प्रकार से उनका समाधान करते हैं, उनको that आशीर्वाद according to the bhava in which one takes his shelter, accordingly Bhagavan reciprocates with him. और फिर ये भी कहा था कि And Bhagavan also said that जो कोई कुछ भी करता है that whatever one does, one is follows his path only. सर्वशः। तो इसमें दो बात आती हैं। एक तो ये कि सब लोग भगवान की So here there are 2 points that why दूसरा जो don't everyone, why does everyone not take shelter of Bhagavan? भगवान के पथ पर चल And those who are not taking shelter of Bhagavan, how can we say that they are following his path? यजन्त ही देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा।
अपने कर्मों के फल चाहने वाले Translation: मनुष्य people देवताओं seeking the fruits of their actions worship the इस devas, मनुष्य लोक में because in this world of human beings, फलता है success born of actions comes quickly. तो ये मनुष्य लोक जो है ये कर्म भूमि है So, this मनुष्य material को world, कर्म योनि भी कहते this हैं this human form of इसलिए life, this मनुष्य is लोग called karma bhumi, क्योंकि हाथ where का one मतलब ही has होता to है कर्म perform करने actions. वाला That's why human being has been given जो hands. कर्म करता Hands है are meant to perform karma, हाथ की आवश्यकता पड़ती है वैसे because any शारीरिक if you do आत्मिक any action, मानसिक भी we करते need हैं our hands. But वाचिक such there are लेकिन इसमें mental हाथ का karma and योगदान रहता verbal also, but the है primary इसलिए uses हाथ of का मतलब ये hands. होता है कि कर्म करना है So hands signify तो doing karma. हम कभी देखते हैं कि And when we see देवताओं के किसी के that 4 हाथ हैं किसी के the 8 हाथ हैं Devi Devatas, they तो have वो भी एक 4 hands or शक्ति 8 hands, प्रतीक है so that also शक्ति का symbolizes that they कार्य have करते हैं power to इसलिए do सब हाथों karma. में कुछ ना कुछ वे And that's लिए why हुए हैं in their hands they are चाहे holding वज्र है something or शस्त्र the है other, या some पुष्प है weapon फूल है or शंख है some lotus or तो उससे conch, उनकी शक्ति का etc. So प्रतीक दिखाया गया that है कि किस प्रकार से that symbolizes their power, अनेक कार्य करने की शक्तियां हैं how they have power शक्ति to का do मतलब ही होता है many जिससे हम activities. कार्य करते हैं The power, the Shakti, or the energy means by which we do action. इसमें अपने अंदर कुछ करने की विशेषता रहती है उसी को शक्ति बोलते हैं When we have some तो वे special जिसमें quality ज़्यादा to do शक्ति होती है something, that is called जैसे Shakti. भगवान संसार One को who बनाने has वाले more हैं Shakti, more energy, will do more उनकी work. शक्ति So that's why Bhagavan creates the world, because he has मनुष्य लोग जो unlimited है energy. कर्म योनि है Now, because this human इसलिए form उन्होंने कहा is मनुष्य लोग karma bhumi, ये कर्म लोग है या कर्म भूमि the है field where one क्योंकि performs मनुष्य action. ही कर्म करते हैं So that's why here लेकिन कर्म दो प्रकार people से किया naturally जाता do है एक karma. भगवान के But लिए karma दूसरा can be done in two ways. It can be done for Bhagavan, देवताओं की or प्रसन्नता it के can लिए be done for the pleasure of तो devatas. प्राय करके लोग सकाम Generally होते हैं or mostly people कुछ are काम करने के लिए sakama. इसलिए तो They हम have some desires, संसार में हैं क्योंकि हमारे and अंदर that's why they are still continuing भोग की to इच्छा take है birth कुछ in कामना this है world. उनकी पूर्ति के लिए हमको कर्म करना पड़ेगा So we have उसके desires, and पीछे in हम order to satisfy the desires, कोई we have to लालसा है perform karma. कोई So this इच्छा is a पूर्ति के लिए system, हमको कर्म करना पड़ेगा that we have desire, and in उसके order बाद to फिर fulfill the desire we have to perform karma. हालांकि आजकल कुछ लोग इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं Although some कि people आप are बस preaching nowadays that you just desire उसका ध्यान कीजिए and sit and meditate on your desire, संसार and आपकी इच्छा then पूर्ति the करेगा whole universe will तो ऐसा collaborate होता to नहीं है fulfill your desire. इच्छा पूर्ति So होती है this is wrong idea. It doesn't happen like this. Of क्रिया course, शक्ति है desire is also a shakti. ये Like शक्तियां हैं there is Gyan लेकिन Shakti, केवल Kriya इच्छा करने Shakti. से ही नहीं Desire होता is also a Shakti, but और इच्छा simply by करने से desiring, your desires won't get fulfilled. अपने घर में बैठ के ही सब कुछ करते हैं Otherwise, we would have been just sitting idly at इसलिए home, कर्म का desiring फल की and इच्छा getting our करने से desires कुछ नहीं fulfilled. होता है So that is only possible if you कर्म से desire जो sitting होता है sitting जैसे beneath कोई a पेड़ है wish fulfilling tree. उसके नीचे बैठ के आप जो भी So इच्छा it is करेंगे said there वो that is सब there is a wish fulfilling tree, a मिलेगा kalpavriksha, and your लेकिन desires get उसका हमारे fulfilled पास there. है नहीं But we don't have any तो such tree here. इसलिए भगवान ने That's हमको why क्रिया शक्ति दी Bhagavan है has given इच्छा us पूर्ति करने Kriya की जिसमें Shakti, the Shakti to perform आप क्रिया action. कीजिए तो प्राय करके So लोगों की mostly रुचि जो है इच्छा पूर्ति करने के लिए देवताओं के प्रति people are inclined to यज्ञ worship करने की devatas, do yagyas to please भावना them होती है in order to get their desires fulfilled. इसलिए भगवान ने भी कहा था And Bhagavan had also told this point in the यज्ञार्थ third chapter. देव परस्परम भावयन्ते श्रेय परम वाप्स्यता कि मैंने ये यज्ञ पैदा किया है He said that I have इसलिए इस यज्ञ created से this आप yagya, देवताओं की पूजा कीजिए and उनकी by स्तुति this कीजिए you can worship वो the प्रसन्न हो devatas, जाएंगे please आपकी them, इच्छा and पूरी when they will करेंगे be pleased, they will यही उन्होंने fulfill your desire. ये So there भगवान also he had ने ही said इसका प्रवर्तन किया that है Bhagavan has प्रवर्तन क्यों किया created this पहली path of पहले karma. यथा माम And why has he प्रपद्यन्ते done that? ते भिन्न Because he already said क्योंकि that लोगों में अपनी इच्छा पूर्ति करने की people have ये लालसा रहती है the desire, the intense इसलिए desire उन्होंने उसके लिए भी उन्होंने to enjoy यज्ञ senses. दिए They हैं want to get their desires श्रेय परम fulfilled. भजनता
कि वो देवताओं का यजन So Bhagavan said that they worship devatas. सिद्धि चाहते हैं। Why? Because they want their karma to be successful. की सिद्धि क्या चाहते हैं? And what is this siddhi in karma? Basically, they want wealth भोग and objects of sense enjoyment. जिनको लोगों में प्राय करके इच्छा Mostly people are interested in kama and artha, either wealth for which they work or some objects of sense enjoyment, which may be anything. उसी के लिए लोग So for that only करते हैं। people worship देवताओं का devatas, जो है ये भी and worshipping devatas हमको दर्शाता है कि इसके साथ also signifies that people who do vrata, somebody does vrata for Tuesday or Monday or Saturday. शनि देवता की बहुत पूजा For होती है यहाँ। nowadays there's a lot of puja of Shani Devata. यहाँ शनि देव का मंदिर है। So in Kokilavan there is temple of Shani Dev. So there is lot of rush there. Or people go to Khatu Shyam. उनके प्रसन्नता के लिए व्रत करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं। तो यहाँ So for their pleasure people go to the temples, they do pujas. धातु जो है उसमें संगतिकरण देव पूजा। So here Yash Dhatu also means Sangati Karan, Puja, Dan, all this. दान भी करते हैं कुछ। So some people do fasting, some people do parikrama, some people do charity, some people do parikrama of Govardhan. उनकी भावना So people have this sakam bhav. चाहते हैं कि हमें कुछ अर्थ, They want wealth हमारी समस्या का समाधान or a solution to their problems. लेकिन प्राय करके लोग But mostly people do not approach Bhagavan. हालांकि Although जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी तप हैं, whatever yajnas and tapasyas are prescribed, for which Bhagavan said that सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं पृच्छति। कहते हैं कि जितने भी यज्ञ हैं, तप है, that whatever yajnas, tapasyas are there, I am their bhokta or the enjoyer, and I am everyone's well-wisher. I am everyone's friend. One who understands this achieves peace, and one who doesn't understand this remains disturbed. That's also what it means. आकाशात् पतितं तोयं गच्छति सागरं प्रति। तो जैसे पानी ऊपर से गिरता है तो just like water falls from the top and it enters the ocean, वहीं से आता वहीं चला जाता है। इसी प्रकार it comes from the ocean and it enters the ocean. Similarly, the namaskar that is done to devatas ultimately reaches Bhagavan only, because everyone is his anga. Like in Gita, in the 11th chapter, he will show in the Virat Roop. But then what is the problem? Because it is ultimately reaching Bhagavan only. So Bhagavan says that yes, it is correct in the sense that it ultimately comes to me, but it is done in the wrong vidhi, in the wrong way. That is the fault. तो जब सबका भोक्तारम यज्ञ तपसा मैं ही हूँ तो सीधा उन्हीं के When I am the bhokta of everything, then why not approach me only directly? So the point is, people think that if we go to Bhagavan, he will test us and he will not give us the result quickly. But the devatas, they become pleased very easily. Like Bhagavan Shiva is known as Ashutosh. Asu means quickly and Tosha is satisfied. So he is satisfied very quickly. So same is with the other devatas also. And that is why people worship those devatas. And they worship them just for getting some insignificant material benefit. And their desires get fulfilled and they are happy, they are content with that much only. But what is Bhagavan? Bhagavan is like your father. He knows that the devotee who is approaching him, what is good for him, what is actually good for him. Like sometimes a child wants to eat something, but the parents know that it is not good for the child, so they don't give that.
to the child, या कुछ ऐसा काम करना चाहता है तो उसको रोकेंगे, or the child wants to do something but the parents forbid him or her from doing that हित देखते हैं, because they are our well wisher. जो हमारी इच्छा That is why वो हमारे हितकारी नहीं है, if जो हम इच्छा कर रहे हैं उसको what is not good for होने us, वाला है, अंत तो गत्वा उससे हमको हानि है, ultimately if something is harmful for us, ऐसी चीज हम then उनको नहीं देते हैं। parents don't give that to us. वो इस प्रकार से है कि जैसे कोई It is as वैद्य if है, जो there is a good चिकित्सक physician, वैद्य है, तो वो आप उसके पास में जाएं तो आपको बताएगा कि आप इस दवाई को लीजिए और इन चीज़ों से परहेज कीजिए, और आप कहें कि क्या मैं so the मिठाई good physician, he will tell you what to eat, what not to eat. हानिकारक है तो कहेंगे कि नहीं, If you ask, can I eat sweets? मिठाई खाना But if those sweets are harmful आज्ञा नहीं, in your current state of तो वो health, आपको मना then the करेगा, physician will इससे prohibit परहेज you करिए, from eating that. तो रुकेगा नहीं, Even if you become upset with the physician, that doesn't mean he will allow you to eat that. नहीं देखेगा। So the physician तो will not care ये for whether देखेगा you कि are आपका हित किस में है। happy or तो not भगवान भी happy. इसी He will प्रकार से simply check what is good for you. निःश्रेयसम विद्वान न वक्ति So अज्ञानी Bhagavan is also like that. न राति रोगिणोपथ्यम वांछतोपि भिषक्तम। तो जो व्यक्ति ये जानता है कि The इन person who काम knows कर्म में that जाने से uh, लाभ नहीं होगा, engaging इसलिए these वो people in sakam karma is not for their benefit, then that person does not instruct इसलिए accordingly. भगवान भी उसी प्रकार से हैं, वो So देखते Bhagavan is हैं also like that. He अगर sees that इसकी इच्छा पूर्ति मैं कर दूं, if मैं किसी को I धन दे satisfy दूं, this person's desire, let's तो say he उसकी wants इंद्रियां wealth, संयम में नहीं है, but his senses are धन not मिल भी जाएगा in control. तो उसका So if दुरुपयोग he gets करेगा wealth, he will misuse और that दुरुपयोग wealth. करके And then अपने पैर पर by कुल्हाड़ी misusing मारेगा। that wealth, इसलिए he will वो destroy शास्त्र his में own कहते life. हैं कि So he doesn't give that. यस्याहम अनुगृणामि हरिस्य तद्धनम शनै, In fact, he जिसके goes ऊपर मैं कृपा to the करूंगा extent he says उसको that भी मैं धन का if I दान am करके specially merciful on somebody, जीवा then को सुखी slowly I करूंगा। take away that person's कहते wealth. हैं कि तलवे के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, So कि when ये कैसे people भगवान hear हमारे धन this, का हरण कर रहे हैं, they will be हम इतना shaken मेहनत करते हैं, that what kind ये of सब God is पैसा this who चला is जाएगा, taking away our wealth? We work so ऐसे hard भगवान की for पूजा कौन earning करेगा। wealth, but he is secretly taking it इसलिए away. So लोग who will like to ईश्वर से worship डरते हैं, this type of Bhagwan? That's why people are ईश्वर scared से of worshipping Vishnu. अपेक्षा करते हैं, They say that if you worship Vishnu, he will test you. He is इस तरह से very वो is किसी very भी harsh. देवताओं के पास में जाते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर So भगवान they so people approach the other devatas. So that's why Bhagavan is telling here. ये देवता और क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो कर्मजा सिद्धि और कर्म से जो सिद्धि होती है वो So जल्दी हो जाती है। the siddhi that happens with this सिद्धि होती है by कर्म going से, to the devatas, it happens very quickly. The स्वरुद्धि siddhi by ज्ञान, karma. One siddhi is by the jnana. ये कहावत है कि ज्ञान के It बगैर is मुक्ति said नहीं that मिलती, without jnana there is no mukti. और ज्ञान के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, And for jnana you have to work very hard से नहीं आता। because knowledge doesn't come so easily. तो लोगों की एक तो इच्छा नहीं रहती है So ज्ञान, one is that people are not interested in getting दूसरा उससे knowledge, उनको कुछ लाभ नहीं and the other is होता है, they don't see any visible result क्योंकि from ऐसे knowledge लोग बहुत कम होते हैं। because there are very few people who desire मनुष्य नाम हृष्यस्य liberation. कश्चित् यतति सिद्धये। तो कश्चित् यत्ते सिद्धये का मतलब सिद्धि के लिए, सिद्धि का मतलब वहाँ मोक्ष के लिए है कि हजारों हजारों So in में this verse, कोई what एक ही Siddhi means is moksha or liberation. Bhagavan is telling that out of thousands of उसके लिए people, प्रयत्न करता है, there is hardly one बाकी who लोग मोक्ष के desires, प्रयत्न who करते works हैं, for बाकी liberation. अर्थ और काम के लिए। Otherwise, mostly people work for artha and और वो kama. मुक्ति आसानी से मिलती नहीं है। And that liberation is also not attained easily. यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। जो इस प्रकार से यत्न कर रहे हैं और वे सिद्ध Those who are working hard to कोई get एक liberation, व्यक्ति out of them, भगवान के तत्व को one जान rare सकता है। person can understand the tattva of Bhagavan. सो यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः, और तत्व से जानकर ही वो कहते हैं देहम त्यक्त्वा पुनर्नैति। पहले And बाद में having known Bhagavan in tattva, यो वेत्ति तत्त्वतः,
उसको जानकर ही व्यक्ति को मोक्ष मिलता है one gets liberation after knowing Bhagavan in Tattva. कि इनका It जन्म है is कर्म है, not तो that भी उनके तत्व को समझना कि किस प्रकार not से that you just know that his birth activities are transcendental, it is done. You have to understand in depth, in detail, what is his personality, his actions, how he gets born, what Shaktis are there, तो is इस he सब को also जानना, bound by karma, इसका अनुभव करना, understanding all these aspects about ये him, आदमी understanding संस्कृत में that नहीं and सीखता, experiencing, realizing that, ये केवल only पुराण then रट लेता है, one becomes liberated. Not that you just memorize like a भगवान parrot ऐसे ही that Bhagwan's birth and activities are transcendental and behave like a materialist. That does not work. तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको पूर्ण In order समर्पण to please Bhagavan, you need complete यानी surrender. कि आपको अपना सब कुछ झोंकना पड़ता है, Meaning, you have to और देवताओं के लिए give उसकी आवश्यकता नहीं है। yourself completely, तो संस्कृत में एक everything of शब्द है yours. पृथक भाव, But that doesn't happen with the devatas. In Sanskrit, जहाँ there आप is a किसी word महात्मा prithak को bhav अपने that is पास like a उनके separatist पास mentality. में जाइए, उनकी पूजा कीजिए, ये जन्म So लीजिए, वो with कीजिए, this ये kind of वो करो। mentality, you go to the devatas, you worship तो them, देवता लोग इस and बात what से you खुश want, होते हैं, they तुम्हें give to वरदान you. मिल रहा है, So the devatas, they are more और like जो भी बिक रहा है अगर वो खरीदने का है shopkeepers. और आपको So जानना है whatever कि वो shopkeeper ठीक है is कि नहीं है, selling, even if it is poison, if you आप pay उसको money and if खरीद you लो। want that, they give you. But Bhagavan is तो like the वो father. ज्ञानी है, इसलिए कहा So है Bhagavan सुहृद is बंधु our प्रपन्नानाम, well-wisher. मैं सबका सुहृद हूँ, So he said that I am सबका everyone's हित सोचता well-wisher. हूँ। Suhrid, I desire everyone's welfare. तो ये दोनों में अंतर है, So this is the difference और जब between तक हम इस Bhagavan बात को and नहीं समझेंगे तब Devatas. तक And भगवान की if we do शरण not understand this difference, we do not take shelter of कभी Bhagavan. हम देखते हैं कि We may feel महात्मा that better worship the Devatas अपना because we see that people who come on the समय path of लगे रहते bhakti, हैं, they also remain लगे busy in रहते हैं, worshipping someone else or the other. They are afraid भगवान that को if we छोड़ don't नहीं worship पाएंगे, this Devata, then there will be some loss in our life. माम परित्यज्य Although मामेकम शरणं व्रज, Bhagavan has said that शरण में आइए you मैं just तुम्हारी you give पूर्ण रक्षा take my करूंगा। shelter and I will give you complete सर्वधर्मान protection. परित्यज्य की बात करते हैं, So ऐसा there इसलिए नहीं कहते Bhagavan talks of 100%, Sarvadharman Parityajya, not थोड़ा partial, 95% तक भी उनके यहाँ not चलता giving है, up partially. Even 99, giving up लेकिन 99% also does not work. वो There पूरी चलेगी, surrender is to be 100%. तो वो आसान नहीं है, That is not easy. और उसका मूल कारण ये है कि हमारी And अपनी the main reason is संस्कृतियाँ that हैं, we हमारे have our own कल्चर में, attachments वस्तुओं में, to the body हमारे and things शास्त्रों में, related to हमारी body. संस्कृति के कारण Due to that attachment, हम उस प्रकार की we शरणागति are ग्रहण unable नहीं to कर take सकते that हैं, type of करना नहीं चाहते हैं, surrender, हमारी समझ में भी नहीं आती है कि or शरणागति क्या we है। don't even understand that what sharanagati, what surrender शरण का means. मतलब Sharan घर भी होता है, means home also. तो जैसे आप घर में अंदर घुसते Like हैं when you तो enter पूर्ण रूप से a घुसते हैं home, ना, you enter ऐसा तो completely. नहीं है कि आपका हाथ पैर बाहर रह गया, आप It is not that your hands and लेकिन legs जब are आप outside or you are inside. उसकी When you enter the शरणागति लेते home, हैं, when you take उसके shelter of the home, because the home also gives you साफ shelter, हवा पानी it gives you shelter from rain, from heat, from तभी मिल cold. जाता है जब It पूर्ण रूप से protects उसके you, अंदर but it will रहें, protect you only if you live, और अगर आप stay completely समय inside. निकालें, If खूब you बड़ा keep your head outside the कीचड़ window पैदा हो जाए and snowfall is going on, then तो naturally भगवान की शरण भी you उसी will catch प्रकार से cold. लेनी पड़ती है, So so we have to take वो shelter आपको of Bhagavan सुरक्षित also रखेगा, like that only, and then only Bhagavan will give us शरणागति कैसे complete होती है वो protection. ही जानते हैं, And what type of protection does he give? कोई That भी is देखेंगे only that सब something that कुछ he आपको दे knows, देगा, not that he will protect us according to शरणागति our नहीं liking. मांगोगे तो इसका मतलब है आपने पूर्ण रूप से Because if शरणागति you नहीं की, want some special type of protection according to आवश्यकताएं your जो liking, then it उसको means कहते that हैं वो you करेंगे, have not taken shelter. उसी प्रकार Taking shelter means शरणागति भी you है, depend on him अगर आप completely. अभी भी अपनी Whatever he मान करके wants, he रखे will हुए do. हैं कि शरणागति But की if है you तो still भगवान are मुझे मोक्ष maintaining देगा, your independent तो desire, शरणागति है, that वो तो आप uh, भगवान को अपना नौकर then it is मान रहे not हैं, complete surrender. Then चाहे वो basically मेरी you are making Bhagavan as your servant. मेरी इच्छा You पूरी हो, want him जैसे to मैं चाहूँ वैसे do करूँ, as per what तो you like. शरणागति थोड़ी है, वो तो आप भगवान को शरणागति That is देने जा not रहे हैं, surrender. That is actually तो ये reverse. बात You जब are उनकी समझ में making आएगी, Bhagavan only take your shelter. इसलिए जब उनकी
people don't understand this, and when their desire is not fulfilled, they become upset with Bhagwan. They say that I will not go to temple anymore. They show their ego. So there is no loss for Bhagwan in this. He will remain your well-wisher only. But if what can he do if you keep the pot upside down reverse, then how will he fill milk in that? So we have to become the patra, means the proper vessel. But if we are not qualified, then we don't get his mercy. So then that's why Bhagavan is telling here, और क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। और फिर ये लोग जो कहा था मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य, कि सब मेरे ही पथ पर चलते हैं। and when Bhagavan said that everyone follows my path only, so those who are doing puja of devatas, that is also puja of Bhagavan only, but it is puja of Bhagavan in the wrong way, the wrong vidhi. Means that he is not especially happy with this, but of course it is better than not worshipping anybody, just roaming around. So it is definitely better than that, but still you are not understanding Bhagavan. Like it is like, suppose your father is very wealthy and he can give you everything, but you do not approach him, but you approach, let's say you approach his treasurer and you ask money from the treasurer. So the money that the treasurer will give will also be your father's money only, and maybe the father has told the treasurer that if my son approaches you, give him money. So it is father's money only that you are getting, but the father will think that why is he not approaching me directly, why is he approaching the treasurer? So now also you are getting it from the father only, because no devata is independently capable to give anything to anybody. Whatever the devatas give, whether it is Ganesh or Bhagwan Shiva or Durga, so all the energy, all the Shakti comes from one source only, and it is from his mercy only that everything works. But so when a person approaches the devatas, so then Bhagavan thinks, okay, at least he is approaching the devatas. He is better than those who don't even approach. So at least he is not asking money from the neighbor. He is asking from the treasurer only. So this will not be pleasing to Bhagavan. So that's why when he said that this is everyone follows my path only, this is also his path only. But one path is straight and the other is lengthy, it is curved, it is indirect. This is the difference between both. Now in the next verse, Bhagavan explains that why is it that people approach different devatas, and why do they have these different desires. So he's explaining the main reason behind that. गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम्। मैंने विभिन्न मनुष्यों में सक्रिय गुणों Translation: the four divisions of human society or varnas were created by me in accordance with the preponderance of the gunas operative in different people and in accordance with the corresponding character of their actions. Although I am the originator of this system, know me the imperishable as the non-doer, being beyond the gunas and changeless. So every person has his own taste, own interest. Why? So its main reason is that everyone's swabhava is different. Everyone's prakriti is different. And due to having different nature, everyone has different desires, and then accordingly they do different actions.
इसको समझकर भगवान ने So, फिर एक understanding ऐसे this, समाज की Bhagavan शुरुआत की। created a system according to which the society can function. तो उस व्यवस्था का नाम ही So, चातुर्वर्ण है। that यहाँ system पे is called वर्ण का Chaturvarna. उन्होंने Now, here he नाम has दिया है, लेकिन taken the संस्कृत name only भाषा for में Varna, but ये along with Varna, the ashram संस्कृत में लिखा हुआ is है also created by him. याज्ञवल्क्य पुरुषस्य आश्रमैः सह चत्वारो जग्गीरे वर्ण गुणैः विप्रादय पृथक, कि भगवान ने अपने शरीर से ही चार So he वर्ण says that और चार आश्रम उत्पन्न Bhagavan किए, has created the four varnas जिसमें and से four ashramas from his body only. उपजाति From the से head there क्षत्रिय is Brahman, from the और hands बीच it's वाले Kshatriya, मध्य से वैश्य और from the ऊपर middle शूद्र। part there is Vaishya, and from the legs the Shudra. तो आजकल ये वाला श्लोक So nowadays थोड़ा this खतरनाक verse है, is a little dangerous क्योंकि इसको लोग because ऐसे श्लोकों को सुनकर लोग बिदक जाते हैं। because hearing this people become disturbed समाजवाद because the और socialism, communism, इसका इतना प्रभाव है, it has such deep influence जो वर्ण that व्यवस्था है the उसके Varna विरोध में system, बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बोला जा चुका है, lot has been written उसके and खिलाफ spoken against Varnashram system. Lot has been preached उसका मूल against कारण है Varnashram कि system. कोई In भी that the व्यवस्था main होती है reason for that is that whenever there is any उसमें system, समय के साथ में then with the progress of कुछ time, खामियां, कुछ then कमियां आ some जाती हैं, deviations they जिसकी start सुधारने के लिए occurring and the भगवान people ने स्वयं start ही कहा इसी misusing the प्रकार system. पहले इसी अध्याय में Bhagavan himself also कि told earlier in this chapter महता योगो नष्ट परंतप, कि ये योग जो है that this वो yoga, समय बीतने के कारण नष्ट हो गया, लुप्त हो गया, after नष्ट नहीं passage हो of गया, लुप्त हो गया। time, this yoga इसी प्रकार से ये became lost. वर्णाश्रम विभाग जो Destroyed means भगवान ने lost. बनाया था, So the Varnashram system that was created by Bhagavan for तो ये smooth बनाया तो functioning of समाज society, की भलाई के लिए था, he had व्यक्तिगत made भलाई it हो, for the आश्रम benefit व्यवस्था of हो society समाज की only. भलाई के लिए, Ashram और system व्यवस्था also हो for समाज की भलाई social के लिए, कि कैसे पूरे समाज की benefit भलाई of हो। the whole society जैसे only. आजकल Like nowadays, जो हमारी सरकार है, the कि government that we have, हमारी जिसको बोलते हैं कि वो वेलफेयर the स्टेट है, government, we have a welfare समाज state. के कल्याण के लिए कार्य The करती है, government works for the welfare of the तो society. समाज के कल्याण के लिए ही So भगवान ने भी ये व्यवस्था Bhagavan also बनाई थी, created this Varnashram system for the इसमें कोई welfare of the society only. But then it was इसमें कोई misused. छुपाने वाली बात नहीं है, There is nothing to कि hide in जिनके that हाथ में शक्ति होती है, because those who have power, उनके पास संभावना होती है कि जो दूसरे then there is also possibility कमजोर व्यक्ति हैं that they उनको misuse that नुकसान power पहुंचाएं। to exploit ऐसा the होता है, vulnerable sections. वर्णाश्रम के And नाम it has पर happened बहुत in the कुरीति name of कुरीतियां Varnashram. Lot और of lot of evil practices entered the ठीक society है, in the name of इसके कारण Varnashram. आप जो But व्यवस्था है उसको आप that गलत नहीं doesn't कह mean सकते। that you say that the system itself is wrong. अगर By seeing the evil धातु practices, है, you can't blame the system धातु itself. का उपयोग है, Like there is a मनुष्य ने knife, बनाया, and मनुष्य one के who अधीन है, created the यंत्र नहीं knife, है, he did not invent the और इससे knife हम to kill सब्जी others. फल He इत्यादि काट invented it सकते to हैं, cut some things like, काट let's say, सकते हैं। vegetables, fruits, etc., that अगर we उसका cannot do by दुरुपयोग our करेंगे तो hands. आप चाकू But उठा के if काट you देंगे, misuse the knife अगर and then दुरुपयोग start करेंगे तो सीधा criticizing उपयोग the knife करेंगे। only, like if the gun was invented, it इसलिए was invented for कुछ protection. लोग जो But if असामाजिक तत्व हैं the उनका antisocial elements get those दुरुपयोग weapons, the उसके guns, द्वारा and हो they सकता है। misuse that, अस्त्र then शस्त्र को गाली you देते cannot हैं, blame the weapon तो itself. वर्णाश्रम विभाग जो Similarly, है ये तो the एक व्यवस्था Varnashram है, is a system, और उस व्यवस्था में अगर कुछ कमी है तो and उसको if there are ठीक some करके deficiencies in the system, then उसका remove उपयोग those deficiencies. बंद कीजिए, If लेकिन the उसको अगर Varnashram आप system is being व्यवस्था को misused, then stop that हटाना misuse. चाहें, But if you उसका want to प्रभाव destroy the कम होगा Varnashram system itself, और then व्यवस्था that will be of no का use. It will निर्माण not नहीं help होगा। you. And even if you destroy लेकिन जो the प्रकृति system, है लोगों की but वो तो होने the वाली नहीं है, prakritis, the swabhavas that people have, क्योंकि you हम cannot सभी destroy जानते that, हैं कि इस because संसार we all में know that कोई in दो this व्यक्ति world, समान नहीं है। no two people are same. जो
एक साथ पैदा होते हैं, ट्विंस जैसे even twins. जुड़वा, यमल संस्कृत में बोलते हैं, उनमें भी ऐसा नहीं है कि उनका स्वभाव It is not that the एक जैसा ही है। twins have the exactly the same यहाँ तक है कि swabhav. हर एक व्यक्ति का So we know अंगूठे का that छाप every भी person's अलग है। thumbprint is unique. यहाँ तक कि हर एक Everyone's thumb impression is भी unique. अलग है। Even everyone's उनके इतने बारीक संवेदना भी eyelashes, हम भिन्न that भिन्न is हैं। also तो unique. आप पूरे व्यक्ति So को we are देखें उसी so तरीके से बराबर है। individual at the तो detailed आजकल यही level. प्रचार है कि हम So सब how एक can you हैं, say that everyone should become हम equal? सब So समान हैं। nowadays, this is the preaching that we are समानता all है equal. कुछ स्तर पर, लेकिन जब So आप equality is there at एक in जगह some समान हैं, aspects, but if you तो say that we are absolutely आप सब equal, जानते हैं। that is not true. आप स्त्री पुरुष को कहो कि वो समान है, तो If you बिल्कुल say ठीक that नहीं man है। and woman are जैसे equal, कि स्त्री है so पुरुष पुरुष है, absolute equality is not possible between man and भेदभाव आप woman. मिटा नहीं सकते हैं। And you cannot get rid of the प्रयास किया जा difference रहा है कि no matter how much you try, although nowadays it is being और tried बिल्कुल खत्म that तो होगा नहीं, और the बिल्कुल ठीक difference हो जाएगा between नहीं, man and बिल्कुल woman, नष्ट हो जाएगा। the difference should be removed, सृष्टि but and जो if है the वो difference is completely समान से ही removed, then the चलती है। society will be destroyed. जब सम हो जाएगा सब कुछ तो लय हो जाता है। प्रकृति The में जो society भाव works when there is साम्य inequality. होता If है, there सब is कुछ ही complete लय हो जाता equality, है, then there will be सब कुछ ही नष्ट हो जाता है, destruction. उसमें कुछ भी सृष्टि नहीं हो सकती है। जितनी भी सृष्टि होती है The creation that happens आप by जो काम Vishamata. करेंगे वो तभी तो करेंगे जब आपके मन में कुछ कामना होगी। You will do something only जब when there कामना is some करेंगे नहीं desire in करेंगे, you, and तो having उसमें desire भी means विषमता है। there जब is आप some Vishamata in you. साम्य स्थिति में If you are रहेंगे absolutely तो आप कुछ नहीं equipoised, करेंगे, then you will not do anything. You will not even move your आप hand. थम जाएंगे। You will become like matter, like stone. जितनी भी उन्नति होती है So whatever सब सृष्टि development में happens in any field, ऐसे ही होती है, it happens due to लेकिन उसका Vishamata. दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। But that should not be वो misused. तभी संभव है जब हम This उस should सृष्टि be को checked. समझेंगे, And उसके गुण दोष को and this समझेंगे is कि किस possible प्रकार से when we इसका understand that दुरुपयोग किया जाता system है और किस प्रकार से and what are its benefits and what are the possible ways it can be इसके exploited. दुरुपयोग का हम कैसे We should learn कर that. सकते हैं, Like I इसका gave example सदुपयोग of कर thief, you सकते हैं। should know what are the uses इसलिए of a जो knife and what are the possible misuses भिखारी का of हाथ में चाकू दे knife, दे तो वो अपने and आप who काट is लेगा, qualified to keep a knife. तो अपने को ही काट लेगा। If you give a knife to a child, then the child will इसलिए cut his own hand by अधिकार that भेद से knife. So ये सब by चीजें हैं। adhikari bhed, तो जैसा all this system was भागवत created. में चमस ऋषि बोलते So हैं कि like in चार Śrīmad-Bhāgavatam, वर्ण Chamas Rishi शरीर से says बने, that these four ये सब varnas and चीजें ashrams were भगवान के created from Bhagavan's भगवान के body. शरीर के रूप में की गई। So the society has been तो made हमारे शरीर में conceiving of like a human सब form. है, Like in जिससे हम human body, we सृष्टि have को our समझ head सृष्टि by के which we प्रयोजन think, we बनाते हैं। plan, और फिर हमारी रक्षा के लिए हमारे हाथ हैं, and for our protection, our we have our own hands. For और working, we have our खाते हैं heads. तो पूरा शरीर पोषण करने के And लिए when we eat, हमारा for पाचन तंत्र है। nourishment to the entire body, we have the तो digestive कहीं जाना system. है आना है तो And if we मस्तिष्क have to go somewhere, we have to come from somewhere, तो then we चारों have our चीजों से legs. मिलकर ही हमारा So by the combination of these four, our life चारों का जो उपयोग functions, है and all four have their own वो utility, आवश्यकता है। and all four are तो needed. इसी प्रकार समाज में भी चार Similarly, प्रकार के लोग in the मिलते हैं, society, उनको you बराबर का will भाव see four types of साम्यवाद people. किया ये No matter कि how much सबके कपड़े you एक जैसे हों, सबके you कपड़े एक जैसे bring हों, equality, एक जैसे कपड़े पहनाने चाहिए, everybody wearing same type of सबका dress, वेतन बराबर कर दो, having same income, सबका खाना भी एक जैसा ही होगा, having same food, तो फिर भी उन लोगों में क्या आप सोचते हैं सब still, एक जैसे हो do जाएंगे? you think they will become कोई absolutely भेद equal? रहेगा। Still, there will be हर व्यक्ति difference. जो है Some people will have ज्ञान प्राप्त करने में interest in attaining अपने आप knowledge. को अपनी Some शक्ति people को बढ़ाने में will have interest धन in इकट्ठा करने में increasing their physical इसी strength. प्रकार से मेरे को Some देना है, people will have interest in दूसरों accumulating more and more को wealth. उत्पन्न करने में। Some people have interest in तो working आप दोनों को hard ही ला सकते हैं or एक साथ, labor. और इसलिए So there also you cannot ये bring absolute equality. साम्यवाद जो है ये सफल नहीं That's होगा, why this concept of क्योंकि जो मूल प्रकृति है उसको आप नकार नहीं equality सकते। in the society, it never became successful और because you इसलिए cannot get rid of the शीर्ष में prakriti, the swabhavas, the जो ऊपर differences. बैठे हुए हैं And उनको then सब there पता है also there is कि ये चार प्रकार के exploitation. हैं। Those who are sitting at the कोई top, सुनता है तो उसको मारता they है, exploit the other people. साम्यवाद कहाँ रहा है? So then where is the equality?
तो इसलिए इसको समझना आवश्यक है। That's why it is important to understand आजकल के this. समय में जबकि वर्णाश्रम के विरुद्ध में बहुत And कुछ in हुआ today's है, society, especially when मनुस्मृति को Varnashram जलाया is जा रहा है, criticized so much, Manusmriti इसकी is बात करते हैं burnt, उसमें and मनुवाद if की बात somebody है, talks of तो Manusmriti, then people accuse them of being उनकी Manuvadi. कोई गलती नहीं है, So there is no fault of Manu in लेकिन this. उनका Manu सिद्धांत never बहुत said that you गलत है। exploit people. He वो explained this जो भी system. चाहते हैं वो Now अपने those who want to मन के exploit, नाम पर कुछ भी चलाएं, तो उसमें मनु की क्या कमी है। those who exploit in the name of Manu, what is Manu's fault in that? पिता Manu was उसने a king. He सृजनहार was न्याय like a नीति का father, शासन बनाया, and for the benefit of the subjects, he और इसका created this मूल विभाग system. भगवान ही And करते हैं, actually, this system is created by Bhagavan himself. विभाग से। और इसका जो मूल सिद्धांत है वो 3 गुण पर आधारित है, And चतुर्गुण गुण this विभाग, system is rooted प्रकृति के in the 3 गुण सत्व gunas, रजस और तमस। the sattva, rajas, तो tamas. ये भारतीय दर्शन की एक बहुत ही विशेष देन है, उल्लेखनीय है। This concept of the 3 ये gunas 3 गुण is a very unique contribution by the किसी भी Indian एक शास्त्र में darshanas, देखने में नहीं मिलेगा, Indian systems of और philosophy. ये Outside these हमारी systems, सत्ता का in foreign countries, in their philosophies, you will not find this kind of भगवान teaching. 18वें अध्याय में कहते This हैं is कि a संसार foundational में से कोई concept भी चीज of नहीं our है, philosophy. चाहे वो जड़ Bhagavan हो या says चेतन that हो, there is जो nothing in इन this 3 गुणों world के which रहित है। is without devoid of these 3 gunas. तो अगर ये है और 3 गुणों के अपने अपने गुण हैं, So if we have these 3 सत्व गुण का gunas कुछ अलग and प्रभाव they है, have their रजोगुण own का अलग प्रभाव है, influence, तमोगुण का अलग प्रभाव है, sattva, rajas, tamas, they have their तो इसको different हम अपना कर influence, ही नहीं सकते। then you cannot deny that. तो आज आधुनिक मेडिकल साइंस भी कहती है हम हमारा Even the सबका modern medical science also हम says क्या खून that we सबका all एक have जैसा है, blood, but कुछ लोग तो कहते हैं is कि everyone's जिसमें blood the same? ये है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, So there बी also you have नेगेटिव है, different blood इसमें groups. अलग अलग विभाग है। Different एक blood आदमी groups का are ब्लड there, दूसरे को नहीं दे सकते ऐसे, and you just cannot जब तक वो uh, उसका मेल नहीं खाए, give तो blood इसलिए of any person to इसमें जो anybody हमारा else. भेद The है, blood group must match. तो उसको अगर So नहीं that means मानेंगे there is some difference किसी at भी that चीज level का, और also. किसी में गलत If काम the करेंगे, doctor doesn't understand this and does blood तो इसी कारण transfusion, हमारे गुण then the person will भिन्न हैं। die. So similarly, उसी there अनुसार is हमारी a प्रकृति है, difference in the स्वभाव है, gunas और of फिर different वो जो people, गुण and हमारे according to the भीतर preponderance of the दिखाई gunas, we देते हैं, जो have बाहर our प्रकट होते हैं, swabhava, चौथा गुण prakriti. बोलते हैं। And when that same guna is जब expressed सत्वगुण प्रकट externally, होगा तो वो then it ज्ञान is देने called के रूप karma. में, ज्ञान देने के रूप When में sattva gun will express itself as the desire to get knowledge, then the person will work accordingly. तो इसलिए गुण और कर्म विभाग भगवान ने कहा, गुण So विभाग that's से why और Bhagavan कर्म के says विभाग से, the vibhag, the division विभाग of से guna और and karma. कर्म विभाग से, गुण के विभाग से ही कर्म का विभाग है। The जैसा जिसका division of karma प्रकृति is है, according to the division of तो guna only. उसी प्रकार का According to the विभाग prakriti, से अगर swabhava आप of a उसको person, सिखाएं, if you teach एप्टीट्यूड, the aptitude एक उसकी according to प्रकृति है that, और एक इसकी एप्टीट्यूड है, one is the aptitude, one is the कौशल है, prakriti. वो आप सीख सकते So हैं you can learn the skill अभ्यास से। by practicing. लेकिन अगर आप उसको किसी दूसरे क्षेत्र में काम करने को दें, उसका स्वभाव But if you tell that ब्राह्मण person जैसा है, to, if he has a वैश्य nature जैसा of a है, तो वो Brahman पैसा and नहीं make कमा him work सकता, in the field of पैसा Vaishya, वो नहीं कमा सकता। then he will not be able to earn money. वो तो जब भी उसका समय मिलेगा, जहाँ भी जाएगा, वो उसको पढ़ने में लगाएगा। So his nature is to study, and wherever he will go, he will वैश्य study प्रवृत्ति only. है, And उसको if आप somebody has a Vaishya nature and अपने काम में लगा देंगे, वो you भी engage वैश्य him in रहेगा। the job of Brahman, so there also he will do वो उसका business स्वभाव only ही है, वो स्वभाव छोड़ नहीं because सकता, that is his swabhava. He can't give it up. क्योंकि स्वभाव कैसे छोड़ेंगे आपको? How will you give up the स्वभाव swabhava? है आपकी एग्जिस्टेंस है। That is your तो अगर existence. हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो बुद्धिमत्ता इसी में है So if we cannot give कि it हम up, आपको उस then प्रकार it का is better that प्रशिक्षण दें, उस we प्रकार की ट्रेनिंग uh, दें train जिससे ourselves or we train उसको that ज्ञान person प्राप्त करें according to his और nature उस फील्ड only में काम करें। and make him expert in उससे that, क्या and होगा then कि that आपका person जो works in that मार्गदर्शन field. होगा,
So then what will happen? Your mind will be happy, you will be peaceful. उस कर्म को So then करने Bhagavan से said that how by doing that karma सबसे बड़ी you बात can get siddhi, जिसको you बनाया can जिवा become perfect. जैसे पूरा This is सिस्टम most बना है important point. वो The system सत्व was created so अग्रसर that the entire स्वे society स्वे कर्मणि moves ahead towards moksha. संयोगाय संसिद्धिम लभते नरः। क्या व्यक्ति अपने अपने कर्म को करता हुआ जो उसके स्वभाव के अनुरूप है उस प्रकार के So कर्म को the करता हुआ according to one's swabhava, if the सिद्धि प्राप्त person कर is doing सकता है, karma, he can get siddhi. लेकिन ये तभी संभव है जब उसको वो But this समझे। is only possible when he understands that. तो ये जरूरी है उसको समझना। So yes, it is important for him to understand. अब ये प्रश्न उठ सकता है कि Now the गुण तो question may be तीन हैं raised that there are और three यहाँ चार gunas, क्यों हैं, but then why are there four चार varnas? से कम या चार से ज्यादा क्यों नहीं है? Why not less than or more than four? तो इसका मूल कारण ये है कि हर So the एक main reason for that is वस्तु में हर एक in व्यक्ति में ये every तीन गुण हैं, object, in every किसी में या person, किसी में all the ज्यादा three किसी में gunas are कम हो there. It सकता is है। not that some person has only sattva, that's why he is sattvic, राजसिक ही रजसी है, or the rajasic person has only rajas. It is not like that. All three are always there, गुणाएं अलग अलग नहीं but है their proportions are different. और ये तीनों आपस में मिलकर काम करते हैं। And all the three they work together. तो इनके जो सम्मिलन है उससे चार ही वर्ण पैदा हो So सकते हैं। क्यों? by क्योंकि these three जब तीन होते हैं तो together, four हमेशा varnas एक are निष्क्रिय possible. होगा तीन में से, Because in these three, one will always be primary and the और other दूसरा वाला will जो be है secondary. निष्क्रिय रहेगा। Third will mostly be अगर inactive. सत्व मुख्य है So if sattva is तो primary रजस उसका and सहायक है। कौन? rajas सहायक, is its कॉम्प्लीमेंट्री। assistant or और complementary, तमस जो है and निष्क्रिय है तो वो tamas is almost inactive, then such a person becomes brahmana. रजस मुख्य मुख्य है If rajas is primary और सत्व जो है वो and sattva सहायक is है और assisting तमस निष्क्रिय and है तो tamas is सहायक inactive, होता है। then that person becomes kshatriya. अगर सत्व है मुख्य तो फिर तमस If जो है वो sattva नहीं is नहीं होगा, primary, क्योंकि सत्व और तमस में then बिल्कुल tamas विरोध है। cannot be its तो assistant वो because sattva and tamas कॉम्प्लीमेंट्री सहायक नहीं है। always work against each other completely. So they cannot तो be इसलिए जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो assisting each सत्व other. So the रजस combination तमस will be sattva, rajas, और tamas, रजस then सत्व तमस, rajas, sattva and रजस tamas, तमस rajas, सत्व tamas, और and then तमस sattva, रजस or सत्व। tamas, rajas, and then ये sattva. चार ही मेल जो है ना वो संभव Only है। these four combinations are possible. पहला अगर सत्व है तो दूसरा तमस नहीं हो सकता, Because if पहला first अगर is तमस sattva, है second cannot be तो tamas. दूसरा सत्व And नहीं हो if सकता। first is tamas, then second cannot be तो इसलिए चार sattva. ही वर्ण संभव है और That's इन why चार वर्णों में only अंदर जो four है varnas are वर्ग बन possible. सकते हैं, सब कैटेगरीज। Then these four varnas will have their own subcategories. लेकिन That is मुख्य possible. प्रकार ये चार ही होंगे। But broadly, you will have these four only. तो ये इसका सिद्धांत है So this is its और ये principle. तीनों गुण जो हैं ये आपस में मिलकर काम करते हैं। And these three gunas, they work together. तो सांख्य सिद्धांत में ये उदाहरण दिया जाता है कि In जैसे the Sankhya Siddhanta, this example is given एक में ज्वाला होती है, like lamp is there. एक बत्ती होती है जिससे तेल ऊपर जाता है और It has a wick. There is oil and the oil और moves जो up through the wick. ज्वाला है वो सत्व गुण के So the समान है, flame is like the sattva तेल gun प्रकाशित करती है। because सत्व the गुण flame is प्रकाश spreading देता है, light ज्ञान देता है, everywhere. Sattva gun spreads प्रकाश light. देता It है, brings knowledge. It is light. उसका गुण है। और रजस Then सात्विक rajas. का जिसमें तेल चलता है, रजस जो है वो क्रिया करता है Rajas is does activity. और तेल So जो it है वो is like the oil the moving up, and the oil स्थिर होकर itself रहता है एक जगह। is itself लेकिन is like तीनों tamas. It मिलकर ही stays in one place. दीपक But को all जलाते three हैं together only light the एक दूसरे lamp के सहयोग से। तो ये एक दूसरे का with the विरोध help of each other. So और they सहयोगी नहीं oppose है। each other also and they assist each other also. तो तमस जो है वो बिल्कुल स्थिर होकर रहता है, So रजस tamas जो है वो चलता है, चलनात्मक stays होता है, wherever it क्रियात्मक is. होता है, Rajas क्रियाशील is होता है। always in सत्व जो है वो action, प्रकाश देता है, and sattva is रजस जो है spreading वो light. Tamas अंधकार लाता है, brings darkness. सत्व जो है वो हल्का होता है,
तमस भारी, Sattva is light and tamas is heavy. लेकिन आवश्यकता तीनों की पड़ती है। But हम all three are needed. सोते हैं तो होता We है, also need दिन में कार्य when we are sleeping at night, then there is tamas. When we are working in the day, then there is rajas. When you are doing dhyana, chintan, the morning, that is sattva. तीनों की रहती है। So we need all the जब three, एक व्यक्ति में but तीनों का in every person, the proportion of these three, मेल है, मिश्रण है, वो भिन्न भिन्न स्तर का in रहता every है। person, the proportion of these three gunas is different. That's why people have different prakritis. एक वर्ग बना, क्षत्रिय एक So वर्ग, Brahman is one division, Kshatriya is second division, Vaishya is third division, लेकिन and इसमें fourth वही is another वही division. एक जैसे ही होंगे। Now that doesn't mean that all Brahmanas will be same. They will be all like each other, क्षत्रिय सामान्य or रूप all से कुछ Kshatriyas will be विशेषताओं like को will be मान रहे same. होंगे। No, there will be some common aspects in their personality, व्यक्तिगत and सम्मत at एक रहेगी। individual or personal level there will be differences. Nobody can remove those differences. तो ये चार वर्ण का जो है सिद्धांत है, So this is the siddhanta of the four varnas. प्राण ज्ञान में होता है, So Brahmana's heart is in ज्ञान प्राप्त करने के knowledge. बाद He wants to attain knowledge. He wants to give knowledge. He studies, उसका जीवन teaches. उसी में उसको आनंद है। That is his life. He इसके derives knowledge in that only. उसके Whatever is अपने one's गुण के अनुसार prakriti, जब वो कर्म करता है when तो he उसमें उसको works आनंद आता है, according to that prakriti, उसको he आनंद gets lot मिलता of है pleasure, और and उसकी he likes शक्ति to बढ़ती engage है, his mind in that, and that उसमें is काम करता है। what brings him welfare जैसे भगवान ने कहा and संसार leads to कर्म his योजना, development in संसार कर्म career in the society. के व्यक्ति जो है अपने अपने Like Bhagavan गुण said, के अनुसार that every person सिद्धि को प्राप्त करता है। by working according to his guna can get siddhi. क्षत्रिय जो है वो शक्ति का पुजारी होता है, So the Kshatriya, he उसका जीवन worships है कि power, उसको शक्ति प्राप्त करनी है, Shakti. वो His goal of life is to get more and more Shakti. It may be physical power दूसरों के or प्रति power in the ईश्वर society, भाव, the Ishwara bhav, the bhav to rule over नियंत्रण करना, others, to control the ये उसका society. जीवन रहता है। That is his life. इसके बगैर वो जी नहीं सकता, The Kshatriya cannot live without ज्ञान के this. बगैर नहीं जी Like सकता। Brahman cannot live without knowledge. और वैश्य का जो प्राण है वो है धन, वो The धन Vaishya's heart is into wealth. धन He कमाना wants to accumulate wealth. He wants to earn wealth. तो इसलिए That's why उसकी रुचि उसमें रहती है। his interest शूद्र is in का earning wealth. श्रम करना, And the Shudra, his heart is into इसलिए वो परिश्रम working करता है। hard, doing labor. यद्यपि स्वभावजन भगवान ने कहा कि उसका ये स्वभाव ही है, ऐसा नहीं है कि उसको उसके ऊपर ये थोपा जाता है। It is not that this hard work यह is एक उसका imposed on the Shudra. If उसको it is उसमें आनंद imposed, आता that है, then it is not the Swabhava Shudra. Shudra सेवा likes करने में working रस है, this, he likes doing seva. रस जो है वो धन Like में है, Vaishya, is his taste is क्षत्रिय in का रस earning wealth. Kshatriya, for him taste is in प्राप्त करने में है, uh, accumulating army power. श्रम करने में, सेवा Similarly, करने the में, Shudra he gets taste in doing उसी में वो seva, आनंदित होते हैं, working hard. उसको वो भार नहीं मानते। If it is उसका not a load स्वभाव for ही him, वही it's not a burden for him. It और is ये about his स्वभाव ही swabhava. जो है वो पूर्व And जन्म का the है, swabhava that we have, ये it is इनका we get it from the चक्र है previous life. कि So this स्वभाव is a के chakra अनुसार कर्म होता है, cycle कर्म से that हमारा स्वभाव according to swabhava we do और उससे karma, कर्म and आरंभ होता according है। to the karma we get swabhava हमारा जो भी the जन्म next हुआ है, birth. So वो whatever we स्वभाव है, have been हमारा born with, स्वभाव है, जो गुण है whatever swabhava we have been born with, उसके अनुसार हम this कर्म is करते according to our हैं। और karma of our ये previous सारा life. वर्णाश्रम व्यवस्था इस तरह से बनाई है कि किस प्रकार से आप इनका उपयोग This करके varnashram system आराम has से been created मोक्ष प्राप्त कर so सकते that we हैं। can इसमें विकार take its विभाग take बनाए हैं benefit of this system and then get moksha. इसी So the four purusharthas which were created, धर्म के सिद्धांत को लेकर बनाए। it was इसका created उद्देश्य है कि with हम this किस प्रकार varnashram system only. मुक्ति पा सकते हैं। And its goal is to तो ये भगवान ने get इस श्लोक में liberation. बोला। This is what Bhagavan आज के लिए teaches in this समाप्त verse. करते हैं, किसी को We प्रश्न will stop जय here श्रीराम। for today, and if you have any question, you can ask.
बाबा जी, यूट्यूब से एक प्रश्न है, ऋत्विक Question: व्यवस्था के विषय में आपका क्या विचार है? what is your understanding regarding the Ritvik system? क्या है ऋत्विक? तो उसको What is Ritvik system? Ritvik means one who does the yajna. यज्ञ किया जाता है, When the yajna is done, तो वहाँ पर जो यज्ञ करता होता है उनको one who is doing the yajna is called Ritvik. The Ritviks are of 4 types. होता है। If there is a big yajna, then there are 16 Ritviks. क्या I don't know what is the Ritvik system that you are telling. ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? बाबा जी, मैं क्लास में फर्स्ट आना चाहती हूँ, तो मैं देवता की पूजा ना करके कृष्ण जी की पूजा कर सकती हूँ? हाँ, कृष्ण की I want to get first position in class. Can I stop worshipping devatas and worship Krishna? Yes, you should worship Krishna irrespective of whether you want to get first rank or no. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंग्रये। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।